गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो ये आपके सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है कि कैसे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को और ज़्यादा जो है एम्पावर किया जा सकता है और कैसे और ज़्यादा उन्हें रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकता है। तो वो एक गैदरिंग को जो है वो एड्रेस कर रहे थे। इस गैदरिंग में एक सेमिनार था रादर, जिसका टाइटल था इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि इस सेमिनार में उन्होंने बोला है कि हम डोमेन स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स भी जो है वो लाना चाहते हैं, ताकि जो डाइवर्स केसेस हैं और पेंडिंग केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सके। फिर उन्होंने बोला है कि उनकी जो है आपके आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल की जो वर्किंग होगी वो एनालाइज की जाएगी, रेमेडीज सजेस्ट की जाएंगी और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाएगा, और जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं लिटिगेंट्स को उनको भी रिजॉल्व किया जाएगा। अब हम देखते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल है क्या। अगस्त 2009 में इनको बनाया गया है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2007 के अंडर लॉ कमीशन की 169th रिपोर्ट में कहा गया था कि जो डिसिप्लिनरी और सर्विस मैटर हैं उनके क्विक रेजोल्यूशन और के लिए जो है स्पेशल ट्रिब्यूनल होना चाहिए मिलिट्री फोर्सेस के लिए। ठीक है। फिर अब जो ये मिलिट्री ट्रिब्यूनल है इसके पास एडजुडिकेशन की पावर होती है, और डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट जो आपके अराइज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कमीशन, अपॉइंटमेंट, एनरोलमेंट या कंडीशन ऑफ सर्विस, उनको रिजॉल्व करने का काम करता है ये ट्रिब्यूनल। अब इसकी प्रिंसिपल बेंच ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसके 10 रीजनल बेंचेस भी हैं। अब इसकी कॉम्पोजिशन भी देखते हैं। ऑफ कोर्स इसमें जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स भी होते हैं। जुडिशियल मेंबर्स ऑफ कोर्स आपके रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस होंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स जो है वो आपके आर्म्ड फोर्सेस से ले जाते हैं, जो कि जैसे मेजर जनरल मिनिमम रैंक के होने चाहिए, और इवन जो आपके जज एडवोकेट जनरल हैं वो भी जो है इसके मेंबर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। अब पावर्स देखते हैं इनकी। तो ऑफ कोर्स इनके पास एडजुडिकेशन की पावर्स होती है। कोई भी ऑर्डर, डिसीजन, फाइंडिंग की गई है कोर्ट मार्शल द्वारा, तो उसके अगेंस्ट जो है और उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है इसमें जो है एडजुडिकेशन करवाई जा सकती है ट्रिब्यूनल के अंदर। अब ये जो है कोर्ट मार्शल की जो फाइंडिंग्स है उसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, किसी सेंटेंस को रेमिट करना, पनिशमेंट को मिटिगेट करना, कम्यूट करना मतलब लेसर पनिशमेंट अवॉर्ड करना, या फिर इवन बढ़ाना, एनहांस भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस को। तो ये सारी पावर्स जो हैं इन ट्रिब्यूनल्स को दी गई हैं। अब इनकी ज्यूरिसडिक्शन जो है अदर कोर्ट्स की क्या लगती हैं, बाकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या होती है इन ट्रिब्यूनल्स पे। तो ऑफ कोर्स दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च 2022 में कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट है 2007 का, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन जो है उसको एक्सक्लूड करता है। मतलब जो आपके कोर्ट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन नहीं कर सकते आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के ऊपर, लेकिन जुडिशियल सुपरिटेंडेंस जो है वो कर सकते हैं। इवन जनवरी 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो वर्डिक्ट होते हैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के, जो आपके जुरिस्डिक्शनल मैटर हैं, जो जुडिशियल मैटर्स हैं, उनको चैलेंज किया जा सकता है बिफोर हाई कोर्ट्स। ठीक है। लेकिन जो है आपके ये भी बोला गया कि एएफटी के जो ऑर्डर्स हैं उनको एपेक्स कोर्ट में भी जो है वो चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन तभी किया जा सकता है अगर वो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई ऐसा लॉ का कोई ऐसा पॉइंट हो कि जिससे जनरल पब्लिक भी जो है वो इम्पैक्ट हो रही है। तो उस केस में ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को एपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक है ऑफ कोर्स। तो आरटीआई रिस्पांस में देखा गया है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन द्वारा कि दिल्ली पुलिस अगर 80% सिमिलैरिटी भी पाई जाए किसी पर्सन की फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में, तो उसको वो पॉजिटिव रिजल्ट मानती है और उस पर्सन को जो है वो आइडेंटिफाई करती है। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है क्या? ऑफ कोर्स ये एक एल्गोरिदम बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें डिजिटल मैप बनाया जाता है किसी भी फेस का, और उसकी मैपिंग की जाती है ताकि इंडिविजुअल के फेशियल फीचर्स के बेसिस पर उसको जो है मैच किया जा सके अगेंस्ट द डेटाबेस जो कि गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है। अब इसके दो तरह के यूज़ होते हैं। ऑफ कोर्स पहला होता है आपका 1:1 वेरिफिकेशन। मतलब मैंने आपकी जो है फोटोग्राफ अपने डेटाबेस में डाली और कहा कि ये पर्सन कह रहा है कि ये जो है ABC नाम का पर्सन है। तो आपका जो डेटाबेस है वो उस पर्सन की जो है फ़ोटो को जो है वो एनालाइज करेगा और अपने डेटाबेस में देखेगा कि क्या जो ABC नाम का पर्सन है वो यही है या नहीं है। उस पर वो आंसर दे देगा येस या नो करके। ठीक है। तो इससे जो है आपको आप जो है उस आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रूव कर सकते हो। अब ये आपके जो आप फ़ोन्स में आपके आती है फेशियल अनलॉक
आता है फीचर, फेस अनलॉक फीचर आता है, उसमें भी तो यही होता है ना कि आप कहते हो कि ये मैं, आपके फ़ोन को आप कहते हो कि ये मैं हूँ, आपका फेस आइडेंटिफाई करता है कि क्या जो पर्सन कह रहा है कि मैं ये इस फ़ोन का ओनर हूँ, क्या वो ऐसा है या नहीं है, जो वो अपने डेटाबेस से देखता है और उसको फ़ोन को अनलॉक कर देता है। लेकिन 1:n आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसमें क्या होता है कि आप किसी पर्सन का, समझ लो आपने एक टेररिस्ट को पकड़ा पुलिस ने, और उस पुलिस ने उस टेररिस्ट के जो है जो फेस को अपने डेटाबेस में सर्च किया। अब वो पूरा डेटाबेस सर्च करेगा, जो आपका कंप्यूटर होगा या आपका जो सेंट्रल डेटाबेस होगा, वो पूरे अपने सिस्टम्स को सर्च करेगा और बताएगा कि इस फेस वाला पर्सन जो है हमारे डेटाबेस में कौन पर्सन सेव है, या इसकी आइडेंटिटी हमारे पास है भी या नहीं है। तो मतलब n नंबर ऑफ पीपल में वो सर्च करेगा और आइडेंटिफिकेशन करके देगा उस पर्सन की। तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि दिल्ली पुलिस है, जो जनरली ये 1:n आइडेंटिफिकेशन यूज़ करती है। तो बेसिकली सर्च करने के लिए कि ये पर्सन कौन है, उसको में हम कहेंगे 1:n आइडेंटिफिकेशन। अब फेस रिकॉग्निशन जो है गवर्नमेंट बहुत यूज़ करती है ऑफ कोर्स, लेकिन इसके कंसर्न्स भी बहुत हैं। जैसे अगस्त 2018 में देखा गया कि जो दिल्ली पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यूज़ कर रही है, उसकी एक्यूरेसी रेट सिर्फ 2% था उस टाइम पर। ऑफ कोर्स धीरे धीरे ये इंप्रूव होता रहता है, बट स्टिल अगर आप अभी भी सोचो तो 2022 में कितना ही इंप्रूवमेंट हो गया होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना कि फुल प्रूफ हो चुका होगा। अब खासकर माइनॉरिटीज़ के केस में, विमेन के केस में, चिल्ड्रन के केस में जो एक्यूरेसी रेट्स हैं वो बहुत ही कम देखे गए हैं। जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जो ज़्यादातर एक तरह से अगर आप देखो कि कोई कम्युनिटी है, अगर वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है क्रिमिनल क्राइम में, तो उनका जो है उनकी मैपिंग ज़्यादा की होगी, तो उनमें जो है फॉल्स पॉजिटिव्स आने का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर समझ लो कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो किसी तरह से स्पेसिफिकली ड्रेस करता है, किसी तरह के उसके फेशियल फीचर्स हैं, चाहे उसने क्राइम ना भी किया हो, लेकिन क्योंकि पुलिस के पास डेटाबेस उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के दिखने जैसे लोगों का है, तो वो हो सकता है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कहे कि हाँ यस दिस इज़ अ क्रिमिनल, ठीक है, चाहे उसने क्राइम ना भी किया हो। अब कहा जाता है कि जो इमेज रिकॉग्निशन है, इवन अगर उसको हम लेबोरेटरी सेटिंग्स में भी करके देखें तो भी जो है सिग्निफिकेंट एरर्स आते हैं। तो आप ये तो सोच लो कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो इसका कैसे यूज़ करती होंगी। अब फेयर्स ऑफ मास सर्वेलेंस भी हैं। अब पुलिस को डेटाबेस भी बनाना है ना अपना, तभी तो वो 1:n की आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। तो उसके लिए ही जो है उनको बहुत बड़ा डेटाबेस बनाना पड़ता है, लोगों की डेटा जो है प्रिवेसी जो है वो वायलेट होती है। और इंडिया में तो डेटा प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है अभी तक। तो आप सोचो कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो हाई डिग्री ऑफ डिस्क्रिशन के साथ जो है आपके इंडिविजुअल प्राइवेसी को जो है वो वायलेट कर रही हैं, और एक तरह से सिस्टम ऑफ मास सर्वेलेंस बन चुका है। अब वर्ल्ड वाइड इसका क्या रिस्पांस है। यूएस में एक जो है फेशियल रिकॉग्निशन एंड बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी मॉनिटोरियम एक्ट जो है प्रपोज किया गया, याद रखो प्रपोज किया गया, पास नहीं हुआ है ये। इसमें कहा गया कि इस टेक्नोलॉजी को बैन किया जाना चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट इसको ना यूज़ करे, वरना ऑफ कोर्स इसका जो है मिस यूज़ हो सकता है। यूरोपियन यूनियन ने भी एक रेजोल्यूशन पास की है जो कि नॉन बाइंडिंग है, याद रखो, सिर्फ रेजोल्यूशन अपनी इमेज एज ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन वैल्यूज़ ये दिखाने के लिए बोथ यूएस और ईयू ने ये रेजोल्यूशंस पास किए हुए हैं, जबकि इसको एनफोर्स नहीं करते हैं वो, लेकिन दुनिया में दिखाने के लिए कि हाँ हम जो है फेशियल टेक्नोलॉजी को जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपने रेजोल्यूशंस पास किए हैं या प्रपोजल दिए हैं। ऑफ कोर्स फिर भी वो यूज़ इस टेक्नोलॉजी को ज़रूर करते हैं। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को कोई डेमोक्रेसी को जवाब थोड़ी देना है, इसलिए वो उइघुर्स जो हैं आपके जिंजियांग रीजन में उनको ट्रैक करने के लिए ये फेशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इवन यूके ने तो फुटबॉल फैंस जो 2020 में एक फुटबॉल मैच हुआ था उनको मॉनिटर करने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। इंडिया में भी बहुत से जब प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसे खासकर CAA से रिलेटेड प्रोटेस्ट थे, तो दिल्ली पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रल जोनल काउंसिल। तो ये आपका पॉलिटिक्स रिलेटेड टॉपिक है ऑफ कोर्स। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है उन्होंने 23rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल जो है वो चेयर की है भोपाल में। और इस जोनल काउंसिल्स को बनाने का सबसे पहली बार आइडिया प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने 1956 में दिया, और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के टाइम पर जो है डिबेट में ये सजेशन दिया गया। ठीक है, अब जो है आपका 5 जोनल काउंसिल्स बनाए गए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द्वारा। ये सारे जोनल काउंसिल स्टेचुटरी हैं, याद रखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, स्टेचुटरी बॉडीज़ हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो इन जोनल काउंसिल्स में नहीं आती, उनके लिए अलग से एक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1972।
अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया जोनल काउंसिल को? नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, स्टेट्स में जो अगर कोई प्रॉब्लम है, रीजनलिज्म है, लिंग्विस्टिक या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको जो है रोकने के लिए जो है सेंट्रल जोनल काउंसिल बनाया गया, ताकि जो है आपस में मिलकर उसको उन चीज़ों को, ऐसी फिसिपरस टेंडेंसीज को रोका जा सके, सेंटर और स्टेट्स आपस में ठीक से कोऑपरेट कर सकें। उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया, एक फोरम बनाया गया, अपने आपस में आइडियाज शेयर कर सकें, एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। बेसिकली एक क्लाइमेट ऑफ कोऑपरेशन देने के लिए जोनल काउंसिल्स को बनाया गया है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं इसके? यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो इन सारे जोनल काउंसिल्स के चेयरपर्सन होते हैं। चीफ मिनिस्टर जो भी उस जोनल काउंसिल में आते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, और टू अदर मिनिस्टर्स भी होते हैं जो गवर्नर नॉमिनेट करता है फ्रॉम द स्टेट। एडवाइजर्स भी होते हैं, एक पर्सन जो है आपका नीति आयोग अपॉइंट करता है। फिर चीफ सेक्रेटरी, ऑफिसर, डेवलपमेंट कमिश्नर, ये सब भी जो है स्टेट्स जो है वो इसमें एज ब्यूरोक्रेट्स जो है उनको एडवाइजर्स की तरह अपॉइंट किया जाता है। इवन कई बार यूनियन मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। जैसे समझ लो कि सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग है और सेंट्रल जो जोनल काउंसिल की स्टेट्स हैं उसमें पानी का कोई इशू आ गया, तो समझ लो जल शक्ति मिनिस्टर जो है उनको भी नॉमिनेट कर लिया जाएगा उस मीटिंग के लिए। तो टाइम टू टाइम जो नेसेसिटी के बेसिस पर जो है उन यूनियन मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया जाता है। ऑफ कोर्स एडवाइजरी बॉडी है और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को एडवाइस देती है कि कैसे जो है एक्शन ले सकते हैं जो भी इश्यूज उस जोन में आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके सोशल इश्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ मिलकर सेकंड फेज ऑफ ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया है, ताकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी स्किल ट्रेनिंग करवाई जा सके। तो ग्रामीण उद्यमी एक मल्टी स्किलिंग प्रोजेक्ट है जिसको आपके नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड करता है। 6 स्टेट्स में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में। और इसको युवा विकास सोसाइटी सेवा भारती केंद्र जो है उनके द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लैब्स बनाई जाती हैं, क्लासरूम्स बनाई जाती हैं, ताकि जो है स्किल डेवलपमेंट करवाई जा सके ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। ऑफ कोर्स अब हम देखते हैं कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है। तो एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसको सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर बनाया गया है 2008 के अंदर। एक मिनिस्ट्री ऑफ जो है फाइनेंस ने इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया है, पीपीपी मॉडल पे बनाया है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट जो है उनके पास 49% शेयर है इस कंपनी का, और बाकी प्राइवेट सेक्टर जो है वो 51% शेयर जो है वो ओन करता है। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे कंट्री में कराई जा सकती है उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंडिंग देती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमोसेक्सुअलिटी। तो ये ऑफ कोर्स आपका सोशल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि कंट्री जो है सेक्शन 377A, याद होगा हमारी कंट्री में भी यही है आईपीसी का, वैसे ही ब्रिटिश लॉज वहाँ पर भी चलते हैं, तो उन्होंने भी सिमिलर लॉज वहाँ पर सिंगापुर में भी चल रहे हैं ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के। तो वहाँ पर उन्होंने भी सेक्शन 377A जो है उसको जो है वो स्क्रैप करने का जो है वो फैसला लिया है, रिपील करने का फैसला किया है। लेकिन इंडिया की तरह ही जो है उन्होंने फुल मैरिज इक्वालिटी अभी नहीं दी है, अभी भी वो मैरिज को मैन और विमेन के बीच में जो है मैरिज मानेंगे। ठीक है, वैसे जो है क्रिमिनलाइज किया हुआ था जो होमोसेक्सुअलिटी को सेक्शन 377A के अंदर, उसको जो है वो रिपील कर दिया गया है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Armed Forces Tribunal. So Defense Minister Rajnath Singh was addressing, so of course this topic is important for your security and your governance topic also. So Defense Minister Rajnath Singh was recently addressing a seminar based upon Armed Forces Tribunal. So he has said that government is taking steps to empower Armed Forces Tribunal and even trying to make it more responsive. So he has said that we are analyzing its working, suggesting remedies for any shortcomings in the Armed Forces Tribunal, and we will also resolve the problems and difficulties which are being faced by the litigants in the course of availing speedy justice. So he has also stated that domain specific tribunals will also be set up so that diverse cases which are remaining in the tribunal will be addressed, and the pending cases would be cleared at a faster rate. So what are these Armed Forces Tribunal? So of course they were established in August 2009 by the Armed Forces Tribunal Act of 2007 based upon the Law Commission's 169th report, which said that disciplinary and service matters require quick resolutions, and for that a special tribunal for the military forces was proposed. So basically it's a military tribunal, and it has powers of adjudication of trial of disputes and complaints which with respect to commission, appointment, enrollment and conditions of service,
Police. Of course, its principal bench is in New Delhi, and it also has 10 regional benches. So it is composed of judicial members as well as administrative members. And judicial members are taken from the retired High Court judges, and the administrative members are retired members of armed forces, basically those who have held at least a rank of Major General or above. And even the Judge Advocate General, the JAG, is also represented in this tribunals. So what are the powers of these tribunals? Of course, they adjudicate appeals against any order, decision, finding, or sentence which has been passed by a court martial, and they also have the powers to substitute any court martial, and they can remit the sentence, they can mitigate the punishment which has been awarded by the court martial, or even commute any punishment or enhance that punishment which has been awarded by the court martial. So does any other court like the High Court or the Supreme Court has any jurisdiction over these armed forces tribunal? Yes, of course. In March 2022, Delhi High Court highlighted that Armed Forces Tribunal Act may exclude administrative supervision of high courts of these tribunals, but it does not exclude these judicial superintendents. So what it means that the high courts can oversee the judicial orders which are, or the verdicts which have been passed by the armed forces tribunals, but not the administrative matters. The administrative matters would remain with the armed forces only. So in January 2020 also, Supreme Court made it clear that the verdicts of armed forces tribunal can be challenged before the high courts, and in case the litigant wants, then these orders can also the appeal against these orders can also be made against the before the Supreme Court. Of course, only if point of law of general public importance is involved. So the next topic is facial recognition technology. So this topic is of course important for your security section. So our RTI response has revealed that Delhi police treats matches of above 80% similarity as a positive result, which means that if it is checking that this concerned person is ABC or not, if there is 80% similarity in the database, then the police would consider it as a positive result, and it would establish that identity of a terrorist in case it is cross-checking the information. So what is facial recognition technology? Of course, it's an algorithm-based technology which is creating a digital map of the face, and it identifies a person through the facial features. So the most basic use of it is in your phone. Of course, whenever you're trying to unlock your phone using your face, it is using the facial recognition technology. So it's the one-on-one verification of identity, which means that you are saying that you are the owner of this phone. Your phone checks its database and sees that this facial features is yes, it is this person is my owner, and it unlocks the phone. This also the police also uses this, or the government also uses this feature. Let's suppose that in Aadhaar we have this biometric information, or let's suppose that we also include facial recognition in Aadhaar. Then what would happen is that whenever government is going to provide you benefits under certain schemes, it would ask its biometric equipment that this person is claiming to be ABC, and it wants to avail the government schemes under this name. Is this person ABC or not? Then Aadhaar would check its database, saying that this ABC, what are the facial features of this ABC person. If it establishes identity, then of course it will verify your identity and you can avail the government schemes. But in 1:n identification, this is used by law enforcement agencies. So I was giving an example earlier also that law enforcement agencies would, like Delhi police, if let's suppose they have caught a criminal or a terrorist, then they would use this technology, and they would search the entire database of which they have captured, and they would see who that person is. Okay, so it is basically using the technology to identify from n number of facial database that they have captured, and they would identify that person's identity. Okay, and this is what governments are using. This is the criticism also. In August 2018, it was found that facial recognition system was used by Delhi police, and it only had an accuracy rate of 2%. Of course, even after 4 years, how much this facial recognition system has been upgraded or not, we do not know about it as of yet. Of course, it builds up itself
The more you use it, the more it builds up itself, like machine learning. So that's why even the accuracy rates of facial recognition algorithms is found to be particularly low in the case of minorities, women, and children, as demonstrated in multiple studies across the world. So what it means is that let's suppose, I was giving an example earlier also, that a person that are certain community members, they look similar, and they are found to be involved in certain crimes. So it means it is possible rather that if the police catches a person from that same community and tries to establish the facial identity of that person, it is highly likely that the facial technology would give a positive result, even if the person has not committed a crime. So the vulnerable groups are overrepresented in this technology. So the chances of false positives are very high for such groups, even if the person has not committed a crime. And even the scientists are claiming that it is even very difficult to establish identity even laboratory settings. So forget law enforcement agencies; they do not use laboratory settings and to measure the facial identity. So the chances of significant errors are possible. So of course there is fears of mass surveillance. When police, of course, is building up its central database of facial technology, facial features, it only after that they can establish the identity of an individual. So for that they are capturing more and more facial features or faces, so that they can establish identity of individuals that they catch or apprehend during a crime. So for that, which means that the police is indulging into a seamless system of mass surveillance. And in a country like India, where we do not have a data protection law as of now, the invasion of individual privacy would be rampant. So does it mean that we should not be using it? Of course there are certain riders here. Like I was giving an example, in US and European Union, they have passed resolutions, or they have proposed resolutions, that this technology should not be used, but they are using it just to showcase that they are not in favor of this technology. They have made certain resolutions as an insurance or as a safeguard to present their image that they are human, they value human rights, but they are using it rampantly. Their intelligence agencies, their law enforcement agencies, they are using it extensively, despite the members of their Congress or their parliament stating the opposite. In China, the government is also using this technology to track Uyghurs, which is the Muslim minority community in the Xinjiang region of the China, in Xinjiang province of China. So it is also being used by UK, including in areas like to monitor the football fans who arrived for a match in 2020 during the COVID-19 lockdown. And in India also, we have been using it during the protests, especially during it was first reported that the government was using it during the Citizenship Amendment Act protests. So the next topic is Central Zonal Council. So this topic is important for your polity section. So Union Home Minister has recently chaired the 23rd meeting of Central Zonal Council in Bhopal, and the idea, of course, was mooted by the first Prime Minister Nehru in 1956 during the debates of States Reorganization Commission, and that's why the 5 zonal councils were created under the States Reorganization Act of 1956. These councils are statutory bodies; they are not constitutional bodies. Remember this. And these 5 councils are Northern Zonal Council, Central Zonal Council, Eastern Zonal Council, Western Zonal Council, and the Southern Zonal Councils. Why the northeastern states are not included? Because there is another council which was created in 1972, Northeastern Council, under the Northeastern Council Act of 1972. The objective of these zonal councils is, of course, bringing out national integration. If there is any vociferous tendencies or any regionalism which is oozing out in such certain regions, then these zonal councils can address those problems with the central government. They also this zonal council provides a climate of cooperation between center and states, and within the states also, to address the issues which are there between either the state or center, or thus between the states also.
So it is of course chaired by the Union Home Minister. The vice chairperson of the vice chairman of these zonal councils are the chief ministers in each zone, and they become vice chairperson by rotation. The members are all the chief ministers of these zonal councils involved, and the two other ministers who are nominated by the governor, and one person is nominated by the Niti Aayog also for these zonal councils. Even chief secretaries and other developmental commissioners are nominated by each states, including in the zone, for bureaucratic representation. Even the union ministers are also invited to participate in the meetings of zonal councils in case there is a necessity. Like I was giving an example. Let's suppose that in central zonal council states there is a issue of drought, then the Jal Shakti minister would be invited to address those problems. So what are the functions of these zonal councils? So these zonal councils are advisory bodies, and they advise the central government. They advise both the central government and the government of each state, so that all the issues which are there between the states and center can be addressed, and these matters can be taken care of. Okay, so the next topic is Grameen Udyami project. So this topic is important for your governance and also your economy section, because it is of course linked with skill development. So the National Skill Development Corporation, in partnership with Seva Bharati and Yuva Vikas Society, has launched the second phase of Grameen Udyami project, which aims to augment skill training in tribal communities. And this project is a unique multi-skilling project which has been funded by NSDC. It is being implemented in 6 states: Maharashtra, Rajasthan, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, and Gujarat. And it is being implemented by Yuva Vikas Society through Seva Bharati Kendras. And the labs and classrooms are set up so that the tribal communities are given skill training and for their inclusive and sustainable growth. So what is National Skill Development Corporation? It's a not-for-profit public limited company established under the Section 25 of Companies Act, and it was established as a under the PPP model. And the government of India, through the Ministry of Skill Development, owns 49% of NCDC, while the private sector owns the remaining 51%. So basically, the aim is to provide funding to initiatives which are meant for vocational training of individuals or communities. So the next topic is homosexuality. So this topic is important for your social issues. So recently, Singapore's Prime Minister has announced that the country will repeal a British colonial era law which criminalizes grey sex, and this was inherited from the British colonial era. You know that even in India, this was Section 377A of IPC. Similarly, because the British colonial era, and during the British colonial era, this law was made in Singapore also. This law was also mentioned in Section 377A. Okay, so this now after India, almost 4 or 5 years after India, Singapore has recently decriminalized this law. And of course, they have not yet made these full. They have not yet, like India, they have not yet established full marriage equality. They would still consider marriage as between a man and a woman only, but they have just repealed this Section 377A. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.